Aaron, let's see how we can reverse this linked list, right? So we are given a head of linked list, and at last we to reverse the list and return of reverse link, right? So this is our example number one. One is pointing towards two, two is pointing towards three, and so on. And at last we to reverse the order. So five will point towards four, four will point towards three, three will point towards two, and two will point towards one, right? In example number two, 1 points to 2. So you need to return the answer 2 points toward 1, right? And if head is null, you don't need to return anything, right? I mean, of course, you need to return null. So let's see how we can perform this. Uh, so let's say this is our linked list, right? One, 2, 3. So let me open my open board. Yeah. So this is my linked list, right? So let me write this linked list. 1, 2, 3. And let's say 4 and 5, and 5 will point toward null. Yeah, to do so we'll make use of the pointer. So I will, like, I'm using 3 pointer, you can use 2 pointer, right? So first point I will place here. Ref ref will points towards null, right? Second pointer is my current, right? And third pointer will be our next, right? Yeah. So what I will do is, on every step, I will link my prev with current. On every step, I will link my current with prev. And after doing so, you need to increment the pointer value, right? So let's say current is at 1 and previous is at null. So what I did is, on first step, I've connected those two. And then I said you need to increment the pointer value, right? Increment the pointer value. So now prev will be at current position, current will be at next position, and next will be on its next position, right? So after doing so, one is pointing towards null, two like this, three, four, five. And now my prev is at one, current is at two, and next at three. So what I said, on every step, you need to link current with prev, right? So now I'll link my current with prev, and I will shift my pointer value. So after linking two with one, my linked list will be like this. One is pointing towards null. Now two is pointing towards one. Then three, four, five. Now I said we'll increment our pointer value. So prev is here now. Current is here now. And next is here. So you must be wondering why I've used this next pointer. So although there's no need of this next pointer, it's just used for traversing कि current को बार बार कहाँ traverse करूँ. So I will make use of the next pointer कि current को बार बार next position में transform कर दूँ और prev के लिए current डाल दूँ. इसे traverse के लिए यूज है, कुछ और भी यूज कर सकते हो, right? So now my prev is at 2 and current is at 2. What I said, on every step you need to link this current with prev. Now I link with my current with prev. So this node will be destroyed, and now my linked list will look like this. And as I said, after every step you need to increment the value. So prev will be at current, current will be at next position, right? So now prev is here, this is my current, this is my next. What I said, link current with prev and move the pointer.
Now I'll move my pointer. So it's null, 1, 2, 3, 4, and you have to shift the pointer value, right? So now my prev is here, current is here, and this is my null, right? So my next is here, right? So now again I will do on every step link current with next. So this node will be destroyed, and at last my node will look like this: null, 1, 2, 3, 4, 5, and null will be here. Although you need not to mention this null, right? And at last my prev will be here. Current will be at null. This is my current, and you need not to think of next, right? Yeah, right. So this is my final linked list, and at last you can return this prev, right? Since it will always point toward the end of node, right? So this is my example number one. Let's take one more example. One points toward two, two points toward three, right? As I said, I will create my prev that will point towards null. I will create my current, and I will create my next. As I said, I will link one with current with prev on first step, so it will look like null 1, 2, 3, and I will increment the value कि pref current में आ जाए, current next में आ जाए. So this is my pref, this is my current, this is my next. I said I will link again. So 2 1 के साथ link किया. So link list ऐसा कुछ हो गया, null and 2 with 3. मैं pref फिर इधर आ चुका है. ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी ये मेरा करंट पॉइंटर है और ये नल को पॉइंट कर रहा है अभी. एज ए सेट करंट को बार बार प्रेफ से लिंक करो. जब तक लिंक कब तक करना है, जब तक करंट नल ना हो जाए, ठीक है, और प्रेव लास्ट नोड तक ना आ जाए, ठीक है. सो इधर है हमारा नल, इधर है 1, इधर है 2, इधर है 3, राइट. और जब ये लिंक हो जाए मैंने कहा तो प्रेव को करंट पोजीशन में ट्रांसफर कर दो, करंट को नेक्स्ट पोजीशन में. सो प्रेव इधर आ गया, करंट इधर आ गया, ठीक है. एंड नाउ यू कैन रिटर्न द प्रेव टू गेट दिस एंटायर लिंक लिस्ट, राइट. सो हमें ये स्टेप कब तक करना है, जब तक करंट नल ना हो जाए. एक बार करंट नल हो गया हम अपना पॉइंटर स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है. तो लेट्स इसको कोड कैसे करेंगे, ठीक है. जो पॉइंटर का टाइप होगा वो क्लास नेम में ही होगा और स्टार लगा दिया टाइप के लिए. नाउ आई विल मेक यूज ऑफ द प्रेफ. प्रेफ की वैल्यू नल को पॉइंट कर रही है और करंट की वैल्यू हेड को पॉइंट करेगी. एंड नाउ आई मेक यूज ऑफ द वाइल. वाइल लूप कब तक जाना है, जब तक करंट की वैल्यू, करंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए, तब तक हमें करंट को बढ़ाते रहना है, ठीक है. एक नेक्स्ट पॉइंटर यूज करेंगे कि वो करंट की पोजीशन को आगे ट्रेवर्स कराए, ठीक है. एंड नाउ आई हैव टू लिंक द करंट विद प्रेफ. करंट का नेक्स्ट इक्वल टू प्रेफ, ठीक है. एंड नाउ एक बार लिंक हो गया तो पॉइंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है, तो प्रेफ की वैल्यू करंट हो गई एंड करंट की वैल्यू नेक्स्ट पीटीआर हो गई, राइट. एंड नाउ जब ये लूप एंड होगा तो करंट नल में पॉइंट कर रहा होगा और प्रीवियस लिंक लिस्ट के लास्ट नोड की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, तो हम उसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न प्रेफ, राइट. एंड एक और कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर हेड नल हो गया तो उस कंडीशन में हमें सिर्फ नल को रिटर्न कर देना. इफ हेड इक्वल टू नल, रिटर्न हेड, राइट. लेट्स सी, या द कोड इज वर्किंग. लेट्स सी, सबमिट करके देखते हैं. या सो कोड इज वर्किंग फाइन, राइट. So I hope you all got my point कि नोड को कैसे ट्रैवर्स करना है और लिंक को कैसे रिवर्स कर रहे हैं, राइट. सो थैंक यू.